Hello guys, welcome back to the channel. So let's start with the analysis video for 31st of August 2023. So we have been seeing कि कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में जो कावेरी वाटर रिवर शेयरिंग के ऊपर इशू चल रहा है उसके रिगार्डिंग ऑफ लेट तमिलनाडु इज सेइंग कि they were demanding some fixed quantity amount of water from Karnataka, but Karnataka upper riparian state है तो वो advantage again कर्नाटका के पास है and ये situation थोड़ी और worse हो गई because of weaker monsoon this time because of the El Nino that we had. So Karnataka starts releasing the water because of the CWMA's directives. So Kaveri Water Management Authority ने डायरेक्ट किया था कर्नाटका को इतना अमाउंट ऑफ वाटर आपको रिलीज करना पड़ेगा. So cumulative outflow from the Krishna Sagar and Kabini reservoirs have been pegged at around 6,000, approximately 400 cusecs. Karnataka farmers, they launched the protest against the water release to Tamil Nadu, citing drought in the Kaveri basin. तो दोनों साइड पे इशू है, दोनों साइड पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं. तमिलनाडु इज डिमांडिंग मोर वाटर. अब कर्नाटका में हमें देखने को मिल रहा है कि फार्मर्स भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं. तो आने वाले टाइम में अगेन जैसे कि हम बोलते हैं कि सिचुएशन और खराब होगी, फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी ऑफ ड्रॉट दोनों इंक्रीज होगा एंड फ्लडिंग भी हो सकती है. तो वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट सिचुएशन. यहाँ पे अगेन डिजास्टर मैनेजमेंट आ जाता है. सो अगेन river water sharing issue is connected with disaster management also. So again, China doubles down on the new map. You've seen कि China ने एक new map release किया है जिसमें जो इसके territorial claims हैं that violates India's sovereignty. So China, it defended issuing a new standard map for 2023 that India has protested, saying it was a routine practice of China and asking New Delhi to refrain from over interpreting it. So ये चाइना का कहना है. So High Court ने order किया to the governments that you need to act against illegal selling of the medicines जो online platforms पे हो रहा है. And this is one aspect. जब हम pharmaceutical sector की बात करते हैं, this is one of the challenges you can cite in your answers. जो online illegal selling of drugs हो रहा है. So it is important कि जो drug seller है, they need to have a valid license. So that is one aspect. So here we see that Wildlife Conservation Society of India, it has reported the illegal trade of red sand boa. So it is one of the most traded reptile species. You can see it's a snake, and we have a report from Wildlife Conservation Society of India. So उन्होंने बोला कि 172 incidents ऐसे record किए गए of seizures of red sand boa between the years 2016 and 2021. Then again, when we talk about its IUCN status, so it is near threatened and with a decreasing population trend in most of their habitat ranges. So Uttar Mendiratta, it is a program head who countered the wildlife trafficking program of the WCS India, said कि जो report है, it is an attempt to bring to the light कि जो illegal trade हो रहा है in the red sand boa species, especially online trade ज़्यादा हो रहा है, and we need to develop a better understanding that might help prevent this illegal trade collectively and जो ये sale of species हो रहा है. The role of social media is increasing in illegal trade of these species.
So हम बात कर रहे हैं डेवलपिंग कॉमन ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर एथिकल यूसेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड हमने इस बारे में बात करी कि इंडिया का कैसे इम्पोर्टेंट रोल हो सकता है इन डेवलपिंग दिस ग्लोबल स्टैंडर्ड। बट आपको ये चीज भी सोचनी चाहिए कि जो इंडिया का सिस्टम होगा, अगेन दैट नीड्स टू बी यूनिक टू द सिचुएशन दैट एग्जिस्ट इन इंडिया. We need to have an Indian system to regulate artificial intelligence. So east is east and west is west. अब आप यहाँ पे जब बात कर रहे हो कि having a common global standard, तो उसमें आप ये एक as a nuance add up कर सकते हो कि again it needs to suit the unique characteristics and situation to every region. So Oriental and Occidental approaches to legal regulation, they are fundamentally different, and India must look east, not west in this case. So जो Western models हैं वो focus करते हैं risk based approach पे. So the lawmakers they create a pyramid of risk जितने भी exist कर रहे हैं. Identification किया जाता है risk का, which is posed by every type of AI based application. And जो pyramid of risk है, then it proceeds to be divided into 4 categories में risk को divide किया जाता है. Unacceptable risk, high risk, limited risk and low risk. एंड यूरोपियन यूनियन में बात करें तो देयरफॉर जो लॉ मेकर्स हैं दे हैव गॉन अबाउट प्रिस्क्राइबिंग प्रोहिबिटेड क्लासेस ऑफ एक्टिविटीज फॉर द अनएक्सेप्टेबल रिस्क. सो प्रोहिबिटेड क्लासेस मतलब जहाँ पे आप यूज नहीं कर सकते हो इस टेक्नोलॉजी को. ब्राजील में भी यही सिस्टम देखने को मिला है. एंड एज फार एज ईस्टर्न मॉडल्स की हम बात करते हैं तो जापानीज गवर्नमेंट इंटीग्रेटेड इनोवेशन स्ट्रेटजी प्रमोशन काउंसिल, उन्होंने एक फ्रेम किया है सेट ऑफ रूल्स जिसको बोला जाता है सोशल प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन सेंट्रिक एआई. सो दिस वाज पब्लिश्ड इन 2019 एंड जो इसके अगेन इट मैनिफेस्ट जो बेसिक प्रिंसिपल्स है ऑफ एन एआई केपेबल सोसाइटी. सो आप ये फ्रेज यूज कर सकते हो AI केपेबल सोसाइटीज. फर्स्ट पार्ट जो है इट टॉक्स अबाउट 7 सोशल प्रिंसिपल्स हैं जो सोसाइटी और स्टेट को रिस्पेक्ट करने चाहिए जब हम बात करते हैं डीलिंग विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो उसमें जो 7 प्रिंसिपल्स हैं दैट इंक्लूड्स ह्यूमन सेंट्रिसिटी, एजुकेशन एंड लिटरेसी, डेटा प्रोटेक्शन, इंश्योरिंग सेफ्टी, फेयर कंपटीशन, फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी एंड इनोवेशन. तो एज अ चार्ट आप इसको अपने आंसर में प्रेजेंट कर सकते हो टू मेक योर आंसर्स यूनिक. सो काफी अच्छा एंड डिफरेंट पॉइंट है. देन यहाँ पे चाइना के मॉडल की बात की गई है. सो अगेन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न मॉडल कैसे डिफरेंट है देख सकते हो कि ईस्टर्न मॉडल में टॉकिंग मोर अबाउट सोशल प्रिंसिपल्स, जो वेस्टर्न मॉडल है दैट इज रिस्क सेंट्रिक. So Indus Water Treaty again signed in 1960 was brokered by World Bank. And जो basic conceptual चीजें हैं वो आप लोग को पता होनी चाहिए. East flowing rivers, west flowing rivers. एंड यहाँ पे जो मेन इशू है दैट इज इंडियाज हाइडल प्रोजेक्ट्स. सो जो कोर इशू है दैट इज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान दैट इन्वॉल्व्स द किशन गंगा एंड द रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स जो जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है. तो आपको इनकी एग्जैक्ट लोकेशन भी पता होनी चाहिए. सो इंडिया का मानना ये है कि जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हमारे एनर्जी नीड्स के लिए और रीजनल डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. बट पाकिस्तान ने इन प्रोजेक्ट्स के अगेंस्ट ऑब्जेक्शंस रेज किए हैं ये बोलते हुए कि ये इंडस वाटर ट्रीटी को वायलेट करते हैं एंड जो इनका अगेन पोटेंशियल नेगेटिव इम्पैक्ट होगा ऑन द वाटर सप्लाई इन पाकिस्तान. सो एनेक्सर डी में जो प्रोविजंस है इट इज बिलीव्ड कि इट वुड बी वायलेटिंग दैट. So Pakistan at first raised the concerns over the Krishan Ganga project 2006 में and Rattle projects in 2012. So the dispute it continues and सो इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों ने रिकॉग्नाइज किया है जो कॉमन इंटरेस्ट है इन द ऑप्टिमम डेवलपमेंट ऑफ द इंडस रिवर सिस्टम. तो इंडस रिवर सिस्टम के बारे में भी आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कौन से रिवर का सोर्स कहाँ है एंड कौन से रिवर किस रिवर को कौन सी लोकेशन पे ज्वाइन कर रही है एंड अल्टीमेटली कौन से रिवर ज्वाइन करने के बाद बन रही है. सो ये सब आपको पता होना चाहिए. सो इंडिया का स्टैंड जो है अगर हम बात करें जुलाई 6, 2023 with a permanent code of arbitration
it has unanimously rejected India's objections and confirmed its competence to consider and resolve जो भी disputes raised किए गए हैं by the Pakistan. So India, it has been abstaining from participating. So we are trying to abstain from participating in the proceedings at the Permanent Court of Arbitration, and we did not also attend the present proceedings as well. तो इंडिया ने ये बोला कि इंडिया को कंपेल नहीं किया जा सकता है टू रिकॉग्नाइज या पार्टिसिपेट इन द इलीगल एंड पैरेलल प्रोसीडिंग्स नॉट एनविसेज्ड बाय द ट्रीटी. तो ट्रीटी के अंदर ऐसी कोई प्रोविजन, ऐसी कोई बात नहीं की गई है, एंड वी हैव नॉट एग्रीड टू दैट आल्सो. सो इसलिए इंडिया को कंपेल नहीं किया जा सकता है. सो इंडिया हैज बीन पार्टिसिपेटिंग इन द न्यूट्रल एक्सपर्ट्स प्रोसीडिंग्स whose first meeting was held in February, and next meeting is scheduled in September. So 75% of India's population healthy diet afford नहीं कर सकती है according to UN agency report. तो अगर healthy diet नहीं afford कर सकते हैं तो again it raises questions over the nutritional security. So food prices भी high level पे चल रहे. We're seeing food inflation, cereal inflation. So again, right now this is a concern, but healthy diet भी अनअफोर्डेबल है एट द सेम टाइम. तो दोनों एलिमेंट्स की वजह से चीजें और ज्यादा खराब हो जाती हैं. सो वी नो कर्ब्स लगाए गए हैं राइस एक्सपोर्ट्स के ऊपर. So let's understand this in a little bit more detail. 20% export duty imposed की गई है on the parboiled rice till October 15. तो domestic consumers को क्या फायदा हो सकता है इस मूव की वजह से, and what has been the reaction of the exporters, and किस extent तक राइस प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट इंडिया में किया जाता है. तो इसको समझना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए. तो यहाँ पे क्लैरिटी होना इम्पोर्टेंट है. सो राइस प्रोडक्शन एस्टिमेट की अगर हम बात करें इंडिया में कितना किया जा रहा है, so according to the third advanced estimate of the Department of Agriculture and Farmers Welfare, so during the Rabi season of 2022-23, जो rice production था इंडिया में, it was 13.8% less. तो decline हुआ है during this time period. And खारिफ सोइंग डेटा वो हमें ये बताता है कि जो राइस सोन किया गया है, that is around in 384 lakh hectares. This year it is again थोड़ा ज्यादा है कंपेयर टू लास्ट टाइम पीरियड. सो इन स्टेट्स, अगर हम स्टेट स्पेसिफिक बात करें, तमिलनाडु वेयर दी सांबर क्रॉप सोइंग स्टार्ट्स यूजुअली अगस्त के टाइम पीरियड में, कावेरी डेल्टा एरिया के अराउंड. तो सेक्शन ऑफ फार्मर्स हैं जो ये कह रहे हैं कि डिलेड सोइंग इसलिए देखने को मिल रही है क्योंकि शॉर्टफॉल इन साउथ वेस्ट मानसून देखने को मिला है, वीकर मानसून है, एंड अभी हमने बात करी थी कि ड्रॉट भी देखा जा रहा है. तो ट्रेड एंड राइस मिलर्स वो कह रहे हैं कि जो न्यू सीजन क्रॉप अराइवल्स होगा इट विल स्टार्ट आफ्टर फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर, एंड दैट एल नीनो जो इफेक्ट हुए हैं दे आर लाइकली टू इम्पैक्ट द अराइवल्स टू सम एक्सटेंट ओनली. राइस एक्सपोर्टर्स की बात करें, उनका क्या रिएक्शन था टू दिस डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट. सो इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टर है, जिसमें हमारा जो शेयर है दैट इज 45%. सो ओवरऑल जो हमारे राइस एक्सपोर्ट्स रहे अप्रैल टू मई ऑफ 2023 वो 21% हायर थे during the same period last year, and export of basmati rice was 11% higher. Non-basmati rice shipments, they were 7.5% higher. So overall जो हमारे exports रहे during April to May this year, they have increased. So government ने अब introduce कर दी है 20% export duty लगेगी on the white rice and prohibiting the export of the broken rice. लास्ट सितंबर में इम्पोज कर दिया गया था. सो शिपमेंट जो नॉन बासमती राइस है दैट हैज बीन ऑन द राइस फॉर द लास्ट 3 years, एंड जो एक्सपोर्ट ऑफ बासमती राइस है इट वाज हायर देन द प्रीवियस ईयर. सो ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन का डेटा ये हमें बता रहा है. डेटा जो शेयर किया गया बाय द गवर्नमेंट वो ये बोल रहा है कि टिल August 17 दिस ईयर जो टोटल राइस एक्सपोर्ट्स हैं दे वर 15% मोर. सो हम बाकी कंट्रीज की बात करें तो थाईलैंड इट एक्सपेक्ट्स नियरली 25% लोअर प्रोडक्शन. म्यांमार इट हैज स्टॉप्ड द रॉ राइस एक्सपोर्ट्स, उन्होंने कंप्लीटली स्टॉप कर दिया है.
And again, this crop rate is said to be hit in Iraq and Iran also. तो globally, since different countries में उनके वहां पे भी domestic situation खराब है, तो ऐसे टाइम पीरियड पे इंडिया ने, जब इंडिया 45% शेयर एंजॉय करता है, तो उस पे अगेन इसका क्रिटिकल इम्पैक्ट होने वाला है ग्लोबल लेवल पे। देन इंडियन फार्मर्स क्या एक्सपेक्ट करते हैं? सो इंडियन फार्मर्स अगेन गवर्नमेंट के साइड से वो यही चाहते हैं कि एमएसपी उनको ज्यादा से ज्यादा मिले फॉर द राइस एंड जो पैडी प्रोक्योर किया जाएगा, एंड प्राइसेस इट विल नॉट डिक्लाइन फॉर द फार्मर्स। अगेन अगर प्राइसेस और ज्यादा इंक्रीज किए जाते हैं तो ऑलरेडी वी आर स्ट्रगलिंग विद फूड इन्फ्लेशन, सीरियल इन्फ्लेशन, तो अगेन इसका हायर एमएसपी का इन्फ्लेशन के ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो इस चीज को भी बैलेंस करके चलना इंपॉर्टेंट हो जाता है। डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए स्लाइट इंक्रीज हो सकता है राइस के प्राइसेस में एट प्रेजेंट, बट अगर हम लॉन्ग रन की बात करें तो अवेलेबिलिटी इज सिक्योर्ड एंड प्राइसेस दे आर नॉट एक्सपेक्टेड टू स्पाइरल अप। क्योंकि अगर अभी हमने एक्सपोर्ट ड्यूटी इम्पोज करी है तो वो मेन डिसीजन यही है, उसके पीछे का रीजन कि जो इन्फ्लेशन हमें देखने को मिल रही है, पहले हम उसको डोमेस्टिकली रेगुलेट कर लें एंड देन विल टॉक अबाउट थिंक अबाउट द रेस्ट ऑफ द मार्केट्स ग्लोबली। सो एक्सपोर्टर्स क्या कह रहे हैं? एक्सपोर्टर्स कह रहे हैं कि जो प्राइसेस ऑफ द इंडियन पार बॉइल्ड राइस इंटरनेशनल मार्केट में वो कॉम्पिटिटिव है इवन विद द लेवी ऑफ 20% ड्यूटी। मतलब कि 20% ड्यूटी लगाने के बाद भी जितना थोड़ा बहुत इंक्रीज इन प्राइस होगा ऑफ द राइस, वो स्टिल प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिव है। तो कंट्रीज लाइक जो इंडोनेशिया है, जहाँ पे राइस एक्सपोर्टर्स दे आर लुकिंग एट द इम्पोर्टर्स नाउ, उनका कहना है कि इंटरनेशनल डिमांड वेरी हाई एंड जब ग्लोबल राइस मार्केट बुलिश है तो इट विल अब्सॉर्ब द वॉल्यूम एंड हाई प्राइसेस आल्सो। तो सिंस अभी हमने देखा कि बाकी कंट्रीज में भी डोमेस्टिकली सिचुएशन चैलेंजिंग है, तो इसलिए ग्लोबल डिमांड जो है बहुत ज्यादा हाई है। तो 20% ड्यूटी इम्पोजिशन के बाद भी जो थोड़ा बहुत प्राइस इंक्रीज देखने को मिल रहा है, स्टिल द प्राइसेस आर कॉम्पिटिटिव इन द इंटरनेशनल मार्केट। सो इंडिया में कम से कम ऐसी 12 वैरायटीज हैं जो जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग enjoy करती हैं, एंड again these should be insulated from general market interventions. So this is the current scenario. So कुछ changes किए गए हैं in the process for selling the SIM cards. So क्या features हैं of the citizen centric portal संचार साथी, and latest revisions in registering the final point of sale by the providers किए गए हैं, वो क्या changes हैं, एंड अगेन ये जो मेजर्स किए गए हैं ये हमें साइबर क्राइम को टैकल करने में कैसे हेल्प करेंगे। तो पहले तो देखते हैं संचार साथी है क्या। सो ब्रॉडली सिटीजन सेंट्रिक पोर्टल है जो अलाउ करता है सिटीजन्स को कि वो चेक कर सकते हैं अपने कनेक्शंस कौन से नेम्स पे रजिस्टर्ड हैं, वो ब्लॉक कर सकते हैं मोबाइल फोन्स विच आर स्टॉलन और लॉस्ट, एंड वो रिपोर्ट भी कर सकते हैं फ्रॉडुलेंट और अनरिक्वायर्ड कनेक्शंस, एंड वो genuineness of the device को भी verify यूज कर सकते हैं through this portal using the international mobile equipment identity. So far जो पोर्टल है इसने 114 करोड़ एक्टिव मोबाइल कनेक्शंस एनालाइज ऑलरेडी कर चुका है। सो दिस इज द प्लेटफॉर्म एंड इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। एंड रिफॉर्म क्या है पॉइंट ऑफ सेल में? सो फ्रॉम नाउ ऑन इट विल बी मैंडेटरी फॉर द फ्रेंचाइजी agents and distributors of the SIM cards to be registered with the licensees or the telecom network operator. तो जो distributors हैं, sellers हैं, उनको उनका जो registration है with the telecom network operator वो mandatory कर दिया गया है, and जो onus या responsibility रहेगी it would be on the operator to carry out an indisputable verification of the point of sale. And if point of sale it is found to be involved in any kind of illegal activity, the agreement जो होगा उसको immediately terminate कर दिया जाएगा, penalty of ₹10 lakh impose कर दी जाएगी, and this would help in identifying, blacklisting and eliminating the wrong point of sale from the licensing system and provide and encouragement to the upright point of sale. So bulk SIM कार्ड की जब बात की जाती है तो लेटेस्ट प्रोविजंस इट वुड रिप्लेस द सिस्टम ऑफ बल्क प्रोक्योरमेंट द सिम कार्ड्स जो बिजनेसेस या कॉर्पोरेट्स करते हैं विद द सिस्टम ऑफ एंटेलिंग द बिजनेस कनेक्शंस। तो बल्क सिम कार्ड्स की जगह अगेन बिजनेस कनेक्शन जो कि एक साइजेबल प्रोक्योरमेंट रहेगा बाय रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी और एंटरप्राइज। सो
इसी की 20% जो बल्क प्रोक्योर्ड सिम कार्ड थे दे वर मिसयूज्ड। तो अगेन इस चीज को कर्व करने के लिए ये चेंज लेके आए हैं। सो अभी जो प्रोसेस है उसमें ये चेंज है कि इंस्टेड ऑफ बल्क प्रोक्योरमेंट बेसिकली जो बिजनेस कनेक्शंस हैं एंड जो रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटीज एंड एंटरप्राइजेज हैं सिर्फ वो ही कर सकते हैं। सो अब देखा ये गया है कि जो बल्क कनेक्शंस बाय करते हैं, बहुत सारे सिम कार्ड्स बाय करते हैं, दे वुड बी प्रोक्योर्ड एंड देन दे वुड मेक ऑटोमेटेड कॉल्स यूजिंग अ सिम बॉक्स। सो ये बेसिकली मिसयूज किया जा रहा था। सो बिजनेसेस जो है कोई ऐसा लिमिटेशन नहीं है कि वो इतने नंबर ऑफ सिम कार्ड भी बाय कर सकते हैं। इट वुड बी सब्जेक्ट टू कंप्लीटिंग द केवाईसी रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल द एंड यूजर्स। सो जिन लोगों के लिए जो एम्प्लॉयज हैं उनका केवाईसी वेरिफिकेशन भी मैंडेटरी होगा। एंड जो प्रिंटेड आधार का भी मिसयूज देखा गया है, तो जो प्रोविजंस है दे मैंडेट demographic details they would also be required while scanning the QR code of the printed आधार। तो अगेन अगर आप वो QR कोड को स्कैन करोगे एंड अगेन इफ द प्रिंटेड आधार दैट इज बीन बेसिकली दैट्स नॉट द रियल कार्ड, ऑब्वियसली क्योंकि उसमें आप अपनी डिटेल्स चेंज करके उनके गेट इट इजीली प्रिंटेड, तो QR कोड के थ्रू आप उसकी ऑथेंटिसिटी वेरीफाई कर पाओगे। तो दीज आर सम ऑफ द चेंजेस। So violence still continues in the state of Manipur. So mortars, automatic weapons use किए जा रहे हैं by the groups in the hills and valleys to fire at each other. तो again जहाँ से issue start हुआ था situation वही है। अब कैसे ये जो main cause है, जो मेन रीजन है जिसके वजह से ये वायलेंस देखे जा रही है, प्रोटेस्ट देखे जा रहे हैं, जब तक वो एड्रेस नहीं किया जाएगा सिचुएशन कैसे वुड बी बैक टू द नॉर्मल। मेन क्वेश्चन यही है। So CJI asked the president if the president could override the recommendation on Article 370 abrogation or not. So यहाँ पे we are seeing daily developments क्या हैं। तो today again the question that has been raised is कि क्या president override कर सकते हैं recommendation on Article 370 abrogation or not। तो यहाँ पे the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir had recommended to the president not to abrogate Article 370. Was it open for the president to override that advice? So since this is a provision of Article 370 कि अगर आपको abolish करना है आर्टिकल को, तो अगेन जो जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसका रिकमेंडेशन लेना मैंडेटरी है। तो बोला जा रहा है कि क्या जो रिकमेंडेशन है, क्या प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर्स हैं कि वो उस रिकमेंडेशन को ओवरराइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 370 प्रेसिडेंट को एम्पावर करता है टू एब्रोगेट द आर्टिकल बट नॉट बिफोर सीकिंग एंड गेटिंग द रिकमेंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो अब एक इशू ये भी था कि सिंस जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही एग्जिस्ट नहीं करती तो इसको अबॉलिश कैसे किया जाएगा। सो द प्रोविजन टू आर्टिकल 370 clause 3 underscores that the recommendation shall be necessary before the president issues a notification repealing article 370। तो रिकमेंडेशन इज नेसेसरी बात की जा रही है कि क्या इसको प्रेसिडेंट ओवरराइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो मिस्टर वेंकटरमनी सेड कि जो रिकमेंडेशन है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, इट वाज मेयरली एडवाइस एंड प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। So abrogation of Article 370 was to achieve the goal of complete national integration. Nothing could stop the president from doing it. So Constituent Assembly has only a minimal role. This is what he has said. So Solicitor General of India kabhi he asked ki how president could be dependent on the opinion of body outside the Constitution of India. सो सीजे का कहना ये है कि रिक्वायरमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज रिकमेंडेशन दैट कैन नॉट बी ब्रश्ड असाइड, नोटिंग कि आर्टिकल 370 गिव कैटेगोरिकल रिकॉग्निशन इफ नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो देयरफॉर टू से कि ये रिकमेंडेशन जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वाज ओनली एन ओपिनियन एंड नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट वाज
not be, it may not be right. So this is what he stands for. So we are seeing energy ties between Russia and India have increased and strengthened, specifically after the Ukraine war. So Aditya L1 mission की हम बात कर रहे हैं, it would be launched on 2nd of September. So smooth operation of LAM is critical for the success of this operation and mission. So ISRO, it will be using the liquid apogee motor, which was identical to the one used in Mars and Moon missions. So motor, it will shut down for the best part of the 4 months journey of this mission. So mission life is 4 months and again LAM के बारे में again you can थोड़ा सा search कर सकते हो कैसे operate करते हैं, कैसे different है, and since यहाँ लिखा हुआ है कि in the past also it has been used in Mars and Moon missions. So these are some of the critical things that needs to be ensured कि properly function करे for the success of this mission. So जो corona graph है of Aditya L1, it will send around 1440 images of the sun. So जो visible emission line corona graph है, it is the primary payload on board India's first dedicated scientific mission Aditya L1 to study the sun. It will be sending 1440 images of the sun every day to the ground station. So basically observe ये किया जाएगा, जो सन का कोरोना है वो continuously observe किया जाएगा from the Lagrange point 1 of the sun earth system, and which is about 1.5 kilometers from the earth. So main objective of the mission है, Aditya L1 mission का main objective is to basically decipher or know about this anomaly around the temperature of the sun's atmosphere and the surface. So L1 point से again benefit यही रहेगा कि continuously हम sun को monitor कर सकते हैं, उसके बीच में कोई obstructions नहीं है देखने को हमें मिलेंगी. तो WHO envoy का कहना ये है कि G20 it must help deal with glaring inequalities revealed by the pandemic. तो जो अगेन पैंडेमिक से पहले इनइक्वालिटीज हमें नहीं दिख रही थी, पैंडेमिक की वजह से दे हैव कम टू द सर्फेस. इट इज इम्पोर्टेंट कि G20 उनको भी एड्रेस करे एंड दैट आल्सो नीड्स टू बी on G20 agenda. So while some regions they have surged ahead with the vaccinations and treatments, others they were left waiting, and this glaring inequity serves as a profound lesson also. So emerging disparity देखने को मिल रहा है. कॉन्टिनेंट वाइज भी बात कर सकते हो, स्पेसिफिकली अफ्रीका में, एंड देन इंडिया का क्या इंपॉर्टेंट रोल रहा है इन टर्म्स ऑफ रिड्यूसिंग दिस इनइक्विटी, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट. तो एनजीटी ने डायरेक्ट किया है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन को कि उत्तराखंड में आप कम से कम 10,000 ट्रीज प्लांट करोगे 1 महीने के अंदर, and this would be a compensatory tree plantation to make up for the hundreds of trees felled during construction of the road from Simli to Gwaldam. But again, compensatory आप बोल रहे हो, यहाँ पे एक मेन चैलेंज यही आता है कि जो अगर सपोज आपको 10,000 ट्रीज प्लांट करनी है, उनकी सर्वाइवेबिलिटी मेन क्वेश्चन है कि उसको फिर आपको आगे मॉनिटर भी करना है, एंड अगेन वो कितने साल लगेंगे अगेन टू गेट बैक दैट काइंड ऑफ इकोसिस्टम जिसको डिस्ट्रॉय किया गया है. देन अगेन गैबॉन में भी अब हमें देखने को मिल रहा है कि इट इज बीइंग बिलीव्ड कि जो रेबल सोल्जर्स हैं दे हैव आउस्टेड देयर प्रेसिडेंट. तो president is called on people to make noise to support him. Streets in the capital, they saw crowds singing national anthem in support of the military coup attempt. So specifically again Africa continent में ऑफ्टेड हमने नाइजीरिया में देखा कि there was a military coup, and now we are talking about Gabon.
So mutinous soldiers, they have claimed to have seized power in Gabon and put the president under house arrest. So हमारे लिए as an examples तो we have a lot of incidences, but इसके पीछे का reason समझना important है कि क्यों military coup किए जा रहे हैं. So जो political system function कर रहा है, democracy function कर रही है, why people do not have trust in that current political system? So लोगों का मानना ये है कि जो करंट डायनेस्टी रूल कर रही है, इन अ वे जो टर्म यूज किया, डायनेस्टी यूज किया है, अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ अ डायनेस्टी accused of getting rich on country's resource wealth while many of its citizens they struggle to scrap by. So again यहाँ पे देखा ही जा रहा है, there is rising social inequality, income inequality, wealth inequality, equal distribution of wealth नहीं देखने को मिल रहा है. तो because of that military को attempt किया गया है. So they've been discontent with the Bongo family for years, and ultimately, a military coup attempt kiya gaya, and Gabon is also a member of OPEC. So it is somewhere having production of some 181,000 barrels of crude per day, but it's over 2 million people face high unemployment and rising prices. So nearly 40% of Gabonese aged between 15 to 24, they were out of work in 2020. तो गैबन इज अ रिपब्लिक एंड अब जितने भी इंस्टीट्यूशंस उन सबको डिसॉल्व किया जाएगा. So Mr. Bongo is the current president, को accused किया गया with unpredictable, irresponsible governance and risk leading the country into chaos. So you can see end में Niger का भी mention किया गया है. After the mutinous soldiers in Niger, they seized power from the democratically elected government. So यूएसए का कहना ये है कि बिजनेस इन चाइना इट कुड बी रिस्की बिकॉज चाइना में जो स्लो डाउन देखने को मिल रहा है दैट इज अ ग्लोबल कंसर्न. बट यहाँ पे इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी है जब हम बात करते हैं चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी. सो उसमें अगेन इंडिया इज वन ऑफ द अट्रैक्टिव डेस्टिनेशंस एज गुड बिजनेस मार्केट. सो रूरल डिमांड के लिए नेगेटिव फैक्टर्स जो हैं हाई प्राइसेस या इन्फ्लेशन एंड लो इनकम. सो हाई प्राइसेस और लो इनकम मतलब कि लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो डिक्लाइन हो रही है, तो उसकी वजह से रूरल डिमांड अगेन वीकन हो सकती है एंड इसका अगेन डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा ऑन दी डिमांड फॉर द एफएमसीजी सेक्टर इन देयर बिजनेस एंड प्रॉफिट्स. सो डेफिनेटली फेस्टिवल सीजन आ रहा है, बट that may lead to a rise in the consumption demand, but such an increase it will depend on the extent of the skewed monsoon impact also. So specifically obviously rural जो income आ रही है एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर बेस्ड है, एंड अगर मॉनसून वीक इन रहा तो कहीं ना कहीं अगेन जो एक्सपेक्टेशंस है कि इनकम के ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा. तो फेस्टिवल सीजन एक फैक्टर है, बट अगेन इनकम भी देखनी पड़ेगी कि कैसे इनकम में हमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं. So RBI governor flags concerns over few urban cooperative banks. So he says the urban cooperative banking sector showed improved financial performance at an aggregate level in the recent times. Concerns and vulnerabilities they were seen for certain individual entities. So banks को name तो नहीं किया गया. He highlighted there's a need for the urban cooperative banks to strengthen financial and operational resilience so that वो financial and banking sector की stability को contribute कर सके. So आप लोग यहाँ पे सोच सकते हो again role क्या है of the urban cooperative banks in terms of financial inclusion.
एंड क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस को इम्प्रूव करना इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही एस्पेक्ट होता है। एंड फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल रेजिलेंस, तो यहाँ से आप फ्रेजेस भी उठा सकते हो। अगेन ये कीवर्ड्स हैं, जब हम बात करते हैं आंसर राइटिंग की तो वहां पे भी आपको ज्यादा आइडियाज की बात करनी है इन लेस वर्ड्स। एंड अनदर कंसर्न फॉर इन्फ्लेशन इज कि जो ब्रेंट ऑयल के प्राइसेस हैं वो और आने वाले टाइम में इंक्रीज हो सकते हैं, तो सप्लाई ग्रोथ ओपेक प्लस से और स्लो डाउन हो रही है, and that is driven primarily by the US persistent underproduction देखा जा रहा है from several OPEC plus producers due to structural constraints. It bolsters the core thesis behind constructive view on the oil prices. So these are the reasons कि क्यों crude oil prices और increase हो सकते हैं, specifically Brent oil. इंडिया की एविएशन इंडस्ट्री की बात करें तो कैन इंडिया टर्न इनटू एन एविएशन ट्रांजिट हब और नॉट? सो गोइंग ग्लोबल, एयर इंडिया ग्रुप इंडिगो दे ऑपरेट द बल्क ऑफ इंटरनेशनल फ्लाइट्स फ्रॉम इंडिया, तो यू कैन सी द शेयर ऑफ डिफरेंट एयरलाइंस। एंड क्या चेंज हमें देखने को मिल रहा है एंड क्या इंडिया में इतनी पोटेंशियल है कि अगेन वी कैन बिकम अ ग्लोबल ट्रांजिट हब और नॉट? सो बेसिकली पहले ये समझते कि ट्रांजिट हब होता क्या है। सो ट्रांजिट हब एक काइंड ऑफ एन एयरपोर्ट व्हिच प्रोवाइड्स स्मूथ कनेक्टिविटी from one foreign destination to another. So that is a transit hub. So ideally, transit hub should enable seamless transfer experience to someone who's flying from country A to country C via country B. So as a stopover, क्या India इतना potential है कि we can become a kind of a new transit hub at the global level. So यहाँ पे again it requires stronghold of a large carrier with a widespread network so that जो airline it can offer one-stop connectivity to the passengers with a wait time of not more than 2 to 3 hours between flights. So इसके अंडर hub and spoke model जो है that is at play, जहाँ पे traffic is concentrated and then उसको distribute किया जाता है to final destinations at affordable price points and minimum wait period. तो बेसिकली ये हब एंड स्पोक मॉडल बेनिफिट इसका यही है। अपार्ट फ्रॉम दिस, क्या इंडिया में इतना पोटेंशियल है कि वी कैन बिकम अ ग्लोबल ट्रांजिट हब और नॉट? सो 2018-19 में जो इंडियन एयरलाइंस थी उनका जो शेयर था इट वाज अराउंड 40% ऑफ द एयर पैसेंजर ट्रैफिक टू एंड फ्रॉम इंडिया। सो the share it has now increased to 44% in the current time period of 2022-23. And on the other side, we see कि जो share of overseas airlines है वो decrease हुआ है to 56%. So short and medium term में India it has low cost carriers in international segment, but still कुछ concerns हैं, and aviation watchers believe कि India has the potential to become a transit hub जो कि economical हो सकता है and it would be offering basic services to begin with. So even like Air India Group and Indigo players, they can lead in this. And so any candidates for transit hubs में again कौन सी ऐसे airport locations हैं जो initially again they can take the lead is, we can start with New Delhi, and apart from this airlines they have also hired consultants to come up with the best practices in terms of concentration of airlines, minimal connection time होना चाहिए, quick transition होना चाहिए between domestic and international connection. So बाकी transit hubs कौन से हो सकते हैं? मुंबई, बेंगलुरु, again the metropolitan cities है हैदराबाद and Kolkata. So flights from Africa that could find an easy hub in Bombay. Those from Central Europe and West Asia, they can find one in Delhi. So that's how things can go ahead. So क्या कोई policy support है for this? So Ministry of Civil Aviation, it is keen on the idea and it is also encouraging airlines कि they need to provide more one-stop connectivity overseas. So again, airlines and airports they are engaging, they are looking forward to create more larger spaces in the airports for the transit passengers. And government also set in motion a plan to transform Indian airports into aviation hubs. So the plan may call for the creation of dedicated terminals for the international flights or for a large carrier in order to harmonize their travel. So अभी तक ऐसी कोई policy नहीं है, but we can say कि government is working upon it.
Quote of the day is India is emerging as a trusted supply chain partner and value added partner. So companies are happy to come to India for manufacturing and design. Coming to Financial Express newspaper, so global alternative funds expand footprints in realty sector. So recent deals rupees 500 crores lent by HDFC Capital to the others developers. So we are seeing key global alternative funds जो हैं, they are making most of the demand for credit from property developers and they are signing a spate of structured debt deals. So जो global funds हैं, बहुत सारे purposes के लिए पैसा दे रहे हैं, like from refinancing old loans to pre-approval expenses to rescuing the distressed assets. So ये areas ऐसे areas हैं जहाँ पे बैंक नहीं help कर सकते in terms of lending. तो इसलिए जो global alternative funds हैं उनका role important हो जाता है. तो limited amount of lending है by the non-banking finance companies towards real estate, that is also helping the global investors cut the deals, and that's how things are emerging here. The training by MSME Ministry, 1.6 million youth को training provide की जाएगी, which would benefit over 3 lakh MSME units in last 9 years. And मतलब इतने लोगों को already training provide की जा चुकी है, जिसकी वजह से 3 lakh MSME units को फायदा हुआ है through 18 tool rooms and technology centers which are run by the Ministry of MSME across the country. So tool rooms and technology centers बनाए गए in order to provide them training. So unsecured loans में हमें growth देखने को मिल रही है, that too a strong compound annual growth rate. So unsecured retail loans जो हैं like personal loans हो गया, credit card advances हो गए, they have seen 26% computed annual growth rate over the past 5 years. That is the number now stands at rupees 10.2 trillion. So जो share है total bank credit का, these loans they have increased. जो unsecured loans हैं उनका share increase हो गया from 7.8% to 10.6%. And State Bank of India जो है उनका share सबसे ज़्यादा maximum in terms of personal loans. So unsecured loans जो होते हैं वो risky होते हैं, and क्योंकि again they are unsecured, कोई collateral involved नहीं होता है. So जो unsecured retail है, it is a legacy segment for most of the banks to continue कर रहे हैं to fund their customers. And non-banking financial companies है, they've also scaled up such lending activities after the onset of the pandemic, and they've also gained some amount of significant disbursement market share over the past 2 years. तो RBI ने इस चीज से रिगार्डिंग कंसर्न्स रेज किए हैं ओवर द सर्ज इन द अनसिक्योर्ड लेंडिंग, स्पेशली जो NBFCs कर रहे हैं, एंड ग्रोइंग रिस्क ऑफ डेलिक्वेंसीज अमिड हायर इंटरेस्ट रेट एंड इंक्रीजिंग रिटेल इन्फ्लेशन. तो अगेन जो रीपेमेंट्स हैं वो और मुश्किल हो सकती है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट इंक्रीज. So you can see the trend in the unsecured retail loan book. It has grown by 26%. So you can see कि consistently increase देखने को मिल रहा है. Value was 3.3 trillion rupees in financial year 2018. And right now it stands at rupees 10.2 trillion. Then 6-month extension is sought by the industry on the cards regarding the scheme on the chemical, steel, pharma that is going to be extended. So again, schemes जो हैं remission of duties and taxes on the exported products, उसको 6 more months के लिए और extend किया जा रहा है. So जो aim है scheme का, that is to refund the duties, taxes and levies at the central, state and local levels. So drugs and pharmaceuticals, they have accounted for 5.68% of the exports. Share of the chemicals हैं, it was 3.33%. So apart from this, आप इसके और features find out कर सकते हैं.
So vision of healthier world, talk about Kiran Majumdar Shah. She's the founder of Vicon Biologics. So she says that we are on track to integrate a major part of the acquired business in a phased manner, and we'll continue to focus on creating a more sustainable and healthier world while delivering value to all stakeholders in the year ahead. So IT firms, they bank on new tech spends by the global retailers. So that includes retail giants drive tech components जो हैं retail tech spending. US and Europe में जो based retailers हैं like Walmart या Home Depot, they plan to ramp up investment in digital. Then customer experience में again generative AI to enhance the shopping convenience of the customers. वहाँ हमें देखी जा रही है ज़्यादा spending. IT firms benefit. They are expected to secure more deals जो Indian IT companies हैं. Revenue impact क्या होगा? Indian IT firms जो हैं उनका जो notable portion of revenue है that is from the retail sector. So these deals and technology collaborations और ज़्यादा possible हैं. And generative AI solution की बात करें तो even Indian IT firms are offering them like Infosys Topaz to clients aiming to tap into the potential of the AI-powered transformation. Then India-Vietnam relations important है. India's trusted ally in 3 decades of ASEAN ties. Vietnam's manufacturing and India's skilled workforce. They collaborate in many sectors. So Vietnam का manufacturing sector और India में जो skilled workforce again they're synergizing. So strong ties exist between the two countries. They are two trusted allies. They have been central to the fruitful 3 decades of the formal ASEAN-India relations, furthering economic growth, geopolitical security, even in the Indo-Pacific region. So economic ties की अगर हम बात करें तो we are seeing complementary economies हैं हम trade agreements and burgeoning entrepreneur spirit drive the economic ties. And increasing investment opportunities दोनों sides में हमें देखने को मिल रही है. Business collaborations are growing. So shared progress and promising future की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी different areas में political, business, cultural domains में we are trying to strengthen our ties. And दोनों countries के लिए geopolitical landscape पे जो challenge है, we have to navigate through that. We need to continue to strengthen the bilateral relations, and the valuable partnership encapsulates inherent potential to maintain stable and balanced regional order while ensuring mutual progress at the same time. So foreign and domestic investment that is nearly doubled in the recent months. So small and mid caps may we are seeing higher inflows compared to the large caps. So fund managers they advise caution as investors they chase higher returns. तो ये थोड़ा riskier situation हो जाती है. High risk bet हमें ज़्यादा देखने को मिल रही है both in terms of foreign and domestic investments. इंडियन एक्सप्रेस की बात करें तो लेट्स सी अगेन the new things. Gabon के बात कर चुके हैं. We have the map also. It is located on the western coast of Africa, and Libreville is the capital. So this is the location, and आपको पता होना चाहिए bordering countries कौन सी हैं. So recent coup in West and Central Africa की अगर आप बात करो यहाँ पे you can see the according to timeline Niger में of latest जो हमें देखने को मिल रहा है. So starting from August 2020 माली में देखने को मिला, शायद गिने, बुर्किना फासो and Niger. So US ने new pact in किया with Palau over the maritime security in the Pacific region.
So basically Philippines की हम बात कर रहे तो US is in talks to make ports in Philippines facing Taiwan. So again, China के लिए this is not something good news. I think we can directly move on to the explained page to save our time. GDP growth trends and outlook क्या है? Again, very important topic. So GDP data for the first quarter that would be released today. So real GDP growth higher हो सकती है. It could be more than 8%. And that is as per the projections of RBI. But erratic monsoon, weak mining output, and likely slowing of the government's capital expenditure and exports because of the global slowdown. Again, these could be the factors, the four main factors, जिसकी वजह से हम moderation in growth देख सकते हैं in the future टाइम, मतलब आने वाले जो 3 क्वार्टर्स है उसमें हमें इन चारों फैक्टर्स का इम्पैक्ट देखने को जरूर मिल सकता है. सो क्वार्टरली रियल जीडीपी ग्रोथ रेट्स को अगर हम देखें द ट्रेंड, so different time periods Q1 के लिए again it is for the 4 financial years we are having the data. So this was the year जब COVID-19 था and we had the pandemic. So उसके बाद you can see it increased massively and then उसके बाद decline देखने को मिला. फिर Q2 की अगर हम ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अगेन सिमिलर ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है एक्सेप्ट Q4. सो Q4 में कंसिस्टेंटली हमें अपवर्ड ट्रेंड देखने को मिल रहा है. So recent GDP trend जो है growth in this quarter was earlier expected कि only marginally higher हमारी expectations थी. So RBI के जो Q1 GDP estimates थे, they have varied from 6.7% to 7.2% to 7.1% also during December. So GDP growth rate clocked was higher than expected, rate of 6.1% during January to March. And उसकी वजह से जो हमारे growth estimates थी तो वो और ज़्यादा increase हो गए. So most economists they have now projected कि higher GDP growth rate आने वाले टाइम में हमें देखने को मिल सकती है during basically the April to June quarter of financial year 24. Estimates of growth भी higher ही है. Sectors and interest की बात करें, कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात करें तो that is expected to stand out in April to June GDP data as it is likely to post its second straight double-digit growth trend because of capital expenditure by both the central and the state governments, and also we are seeing pickup in the non-financial corporate investments also. So इसलिए construction sector में we have a highly positive outlook, and again some drag is expected from weaker momentum in mining and exports. So again कुछ negative factors हैं. Again projection of the year की जब हम बात कर रहे हैं तो erratic monsoon rainfall is one of the major factors जो हमारी growth rate को hamper कर सकता है. And बाकी दो factors जो again हमारी industrial performance को hamper कर सकते हैं, that is the global economic slowdown if there is no recession, but slowdown definitely देखने को मिल रहा है. And second is monsoon, the performance of which will critically influence industrial prospects because of inflation, and accordingly rural demand भी उसी के ऊपर dependent रहेगी on major basis. So RBI की monetary policy की भी अगर हम बात करते हैं reviewing that, तो उनका मानना ये कि जो headwinds है from the weak global demand, volatility देखने को मिल रही है in the global financial markets, geopolitical tensions हैं, geo-economic fragmentation. So these are some of the negative factors again. So इन सारे factors को मद्देनजर रखते हुए अगर हम बात करें हमारे forecast के लिए for the real GDP growth for 2023-24, so it is projected to be at 6.5% with Q1 at 8%, Q2 at 6.5%, Q3 at 6%, Q4 at 5.7%, with the risk broadly balanced. So this is the overall outlook in the trend.
सो सुपर मून क्या होता है, ब्लू मून क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो. सो इज ब्लू मून एक्चुअली ब्लू और नॉट? तो अगेन थोड़ा साइंस का टॉपिक है. सुपर मून बिगर इन साइज क्यों होता है? सो ये सब आप लोग बार देख सकते हो. अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की हम बात कर चुके हैं. ग्लोबल ऑल्टरनेटिव फंड्स की हम बात कर चुके हैं. इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ऑफ द डे फ्रॉम द बिजनेस पेज. Operational resilience and strengthen the financial and operational resilience for the urban cooperative banks. So Ministry of Electronics and Information Technology is going to host Global India Artificial Intelligence in October. So again, we'll be discussing artificial intelligence models क्या हैं, उसके applications diverse areas में like healthcare, governance, electric vehicles में. And primary aim would be to ensure collaborative and participatory approach, steering AI to enhance governance, actively shaping the world's technology landscape. So our diversity will be in addition to the quality of data sets for any large language models or any AI learning model. So average time taken for the IBC, insolvency and bankruptcy code resolution, is at 3-year high. So again, what are the reforms needed in IBC? बहुत important topic है. And since एक challenge तो यहाँ लिखा ही हुआ है कि जो time taken है for the resolution, that is at 3-year high. So it was brought in 2016. So after 7 years of its completion, what are the reforms needed? And again, success rate की आप बात कर सकते हो, उस पर सोच सकते हो through examples you can bring in that. So that's all for today. Thank you so much for joining us, and to subscribe to the channel. Stay tuned for daily updates and daily newspaper analysis videos.